Hey everyone, in this question we are asked that if the head of the cockroach is removed, when the head of the cockroach is removed, it may live for few days because of the which of the following reason. ठीक है, the first option is the head holds a 1/3 portion of nervous system while the rest is situated along the dorsal part of its body. Second option is the supraesophageal ganglia of the cockroach is situated in the ventral part of the abdomen. And the third option is the cockroach does not have a nervous system, or the last option that we have over here is the head holds a small portion of nervous system while the rest is situated along the ventral part of its body. So in this question we are basically asked about the nervous system of the cockroach. So let us first discuss, let's get a brief about the nervous system of कॉकरोच. ठीक है, कॉकरोच का नर्वस सिस्टम कैसा होता है? सबसे पहले तो द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट. ठीक है, एक डबल ventral nerve cord is present. This nerve cord is paired. ठीक है, ये paired होती है. It is paired, longitudinal and solid. ठीक है, it is paired, longitudinal and solid. It's not hollow guys, it is solid. hollow किस में होती है? hollow जो होती है वो vertebrates में होती है, सॉरी, जो hollow होती है वो chordates में होती है, और chordates में dorsal होती है. ठीक है, जो non chordates होते हैं उनमें ventral nerve cord होती है. So as nervous system there are 9 ganglia present. ठीक है, 9 ganglia present होते हैं. There are 9 ganglia and out of these 3 are present in the thoracic region. ठीक है, 3 are thoracic ganglia and the other 6 are present in abdomen. ठीक है, हेड में होता है, the head has a supraesophageal ganglia. ठीक है, हेड में होता है supraesophageal ganglia which forms the brain. ठीक है, this is equivalent to the brain of the cockroach. This is equivalent to the brain of the cockroach. This supraesophageal ganglia is connected with the subesophageal ganglia via, ठीक है, this supraesophageal and the subesophageal ganglia are connected via circumesophageal nerve rings. ठीक है, they are connected via circumesophageal nerve rings. ठीक है, और ये जो सुप्राएसोफेगल गैंग्लिया होता है या जो हमारा जो ब्रेन होता है कॉकरोचेस का, ये ब्रेन जो होता है दिस सुप्राएसोफेगल गैंग्लिया पासेस इट्स नर्व्स ऑन टू द कंपाउंड आइज. ठीक है, इसकी जो नर्व्स होती हैं वो होती हैं कंपाउंड आइज के पास. एक होती है कंपाउंड आइज और दूसरा होती है इट पासेस इट सप्लाइज नर्व्स टू द कंपाउंड आइज एंड द एंटेना. ठीक है, ये इन दो चीजों को इट सप्लाइज द nerve. ठीक है, कौन? brain supplies the nerves to compound eyes and the antenna of the cockroaches. The CNS of the cockroaches, the CNS of the cockroach, ठीक है, cockroaches का जो CNS होता है, the CNS is formed by the nerve rings and the nerve cord. ठीक है, जो nerve ring होती है, nerve ring along with the nerve cord forms the CNS of the cockroaches. ठीक है, जो PNS होता है, the PNS of the cockroaches is formed by the PNS of the cockroaches is formed by the nerve arising from the CNS. ठीक है, PNS कैसे बनता है? जो CNS से nerves आती हैं, it is formed by the nerves that are arising from CNS. ठीक है, मतलब जो भी नर्व CNS से अराइज हो रही होगी वो क्या बनाएगी? PNS बनाएगी. दैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. और जो ANS होता है, ANS of the cockroach is formed by the 5 ganglia in foregut. ठीक है, it is formed by the 5 ganglia which are present in the foregut and it regulates the peristalsis movement in the foregut which is involuntary. ठीक है, ये ANS is formed by the 5 ganglia which are present in the foregut और वहां पे ये क्या कंट्रोल करते हैं? These nerves control, the ANS controls peristalsis movement in the foregut of the cockroaches. ठीक है, so this was all about the nervous system of cockroaches. Also just one more thing, यहाँ जो हमने देखा था कि 9 गैंग्लिया में से 3 जो होते हैं thoracic होते हैं और 6 जो होते हैं abdominal होते हैं. लेकिन abdominal में जो 6 होते हैं ना, तो abdomen का जो 7th segment होता है, जो लास्ट वाला जो गैंग्लिया होगा, it is not present in the 6th segment of the abdomen. Rather the last ganglia
the sixth ganglia in the abdomen is present in the सेवेंथ सेगमेंट एंड नॉट द सिक्स सेगमेंट. ठीक है, जो लास्ट गैंग्लिया होता है वो सिक्स सेगमेंट में प्रेजेंट नहीं होता है. इट इज प्रेजेंट इन द सेवेंथ सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन. ठीक है, so now let us find out the correct statement. In the first statement it was told that the head holds one third of the nervous system while the rest is situated along the dorsal part of its body. So as we have seen, the nerve cord is double ventral and solid, so it is ventral and not dorsal. So this statement would be incorrect क्योंकि जो हमारी जो कॉकरोचेस की नर्व कॉर्ड होती है वो होती है ventral. So this statement is an incorrect statement and we have to find out the correct statement. So a second option says the supraesophageal ganglia of the cockroaches are situated in the ventral part of the abdomen. तो ये करेक्ट है बट इट इज नॉट द रीजन. हमसे पूछा गया है कि कॉकरोचेस हेड कट होने के बाद अगर हेड रिमूव कर देंगे तब भी कॉकरोचेस जिंदा रहते हैं, तो ये उस चीज का रीजन नहीं है. हमसे उस चीज का रीजन पूछा गया है. द स्टेटमेंट इज करेक्ट बट नॉट द रीजन ऑफ द गिवन क्वेश्चन. ठीक है, द थर्ड ऑप्शन इज द कॉकरोचेस डज नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम. तो ये तो कंप्लीटली इनकरेक्ट है क्योंकि वी हैव डिस्कस द कंप्लीट नर्वस सिस्टम ऑफ cockroaches in the earlier discussion. And the fourth option we have over here is the head holds a small portion of the nervous system while the rest is situated along the ventral part of its body. So this is the correct statement because we have seen कि head में क्या होता है, केवल जो brain वाला portion होता है, the supraesophageal ganglia is present in head. So it holds a small portion of the nervous system. ठीक है, तो इस वजह से अगर head को cut भी कर देंगे तो जो बाकी का जो maximum nervous system है which is present in the ventral part of the body will control the body and therefore the cockroach may live longer even after removing the head of the cockroach. तो हमारा जो correct option हो जाएगा, if the head of the cockroach is removed, it may live for few more days because the head of the cockroaches hold a small portion of the nervous system while the rest is situated or the maximum part is situated along with the ventral part of its body. So I hope this was easy for you. Thank you.